Hello students, I am Yojit sir, welcoming you in the same Max Standard 6 chapter number 10. Today we are going to start a new chapter, that is mensuration of your standard 6. Now what is mensuration? नया चैप्टर है, सब नाम कुछ पता नहीं चल रहा. मेंसुरेशन इज नथिंग बट इट्स ब्रांच ऑफ जियोमेट्री. जियोमेट्री की ब्रांच है इन विच वी आर मेजरिंग द लेंथ, एरिया, डायमीटर, ओके, ऑफ मेनी फिगर्स. क्लियर? सो in this chapter we going to start with what is perimeter. Perimeter क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो perimeter it means the figure. I am taking the example over here. This is my figure, okay, any figure. Now I am giving the measurement to this figure on its side. This side is 1 centimeter, similarly 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. Okay, मैंने सबको measurement दे दिया है. Now perimeter means summation of all the side. जितनी भी side है उन सबका summation करना है. Suppose this में A, B, C, D, E and F. So what I will do? I will sum all the side. That means AB plus BC plus CD plus DE plus EF, clear, and plus FA. That means I am summing all the side and 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 and I will get the answer of my perimeter P. Okay, so 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. My answer is 21 centimeter. So this is called a perimeter. फिगर में जितनी साइड है उन सबका समेशन मतलब प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा. सो टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम योर बुक, एक्सरसाइज नंबर 10.1, क्वेश्चन नंबर 1. The figure I had drawn on the board. See the question I am reading. Find the perimeter of each of the following figure. We have to find the perimeter for each of the following figure. So let's start. This is my first figure, number 1. So perimeter, as I already told you, perimeter means summation of all the side. It is AB plus BC plus CD plus DA. Clear हुआ? Is equal to, what is AB? The AB means 2 centimeter plus BC 1 centimeter plus CD 5 centimeter and DA that is 4 centimeter. So is equal to, now we have to add this 5 plus 1 plus 4, that means 10, 11, 12. That means my answer is, or you can say perimeter for this figure is 12 centimeter. Clear students? Now coming on to the second question of this exercise 10.1, we have to find the perimeter, perimeter P. You can write perimeter is equal to P. The symbol of perimeter is P. So P is equal to PQ plus QR plus RS plus SP. Okay students, now putting its value 23 for PQ, QR that is 35 plus RS that means 40 plus SP here 35. Okay students, now adding this, how we will see here 23, 35, 40 and 35. 5 plus 5, 10 plus 3, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So my perimeter is 133 centimeter for this circle. Okay students, have you understand? So इसको पेरीमीटर बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन है ना, A, B, C, D, दो तो मैंने यहाँ पे सोल्व कर दी. I had already solved 2 sum. Other remaining sum, that is C, D, E and F, that you will solve by yourself. Okay student, till then write this from the board. Now students, coming on question number 2.
For this, exercise number 10.1, question 2 is, the lid of a rectangular box of side 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसको हम टेपिंग करेंगे, ठीक है, तो उस टेपिंग के लिए उसकी लेंथ कवर हो रही है 40 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, लेंथ कवर हो रही है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कवर्ड दैट इज 10 सेंटीमीटर to tape that rectangular box. Okay, now here we have to find the length of the tape required. उस tape की length कितनी चाहिए? That is you can call as a perimeter. Okay students, so perimeter is equal to how much? So rectangular box. So first of all we will draw a rectangular. हम rectangular बनाएंगे. As we know the rectangular length is more compared to its breadth. Clear? So is 40 centimeter. Here also there will be 40 centimeter, here 10 centimeter, and here also a 10 centimeter. This is our rectangular box and we have to tap this rectangular box. Now we have to find the perimeter of this rectangular, that is 40. I am giving a name A, B, C and D. So AB plus BC plus CD plus DA. Okay, so what is AB? That is 40 centimeter plus BC 10 centimeter plus 40 plus 10 is equal to 40 plus 40, that means 80. 80 plus 10, that means 90. 90 plus 10, that means 100 centimeter length require, or you can say perimeter of the tape. उतनी हमें टेप चाहिए. अभी here वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ उसकी सेम हुई, उसकी जो ब्रेथ हुई वो क्या होगी, वो भी सेम होगी. दो साइड की ब्रेथ सेम है और दो साइड की लेंथ सेम होती है. सो इफ आई वांट टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर का अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, सो आई कैन डिराइव द फॉर्मूला पेरीमीटर for rectangle. Okay, perimeter for rectangle. So क्या हुआ, a length plus breadth plus length plus breadth. मैंने बोल दिया आपको दोनों की लेंथ सेम होती है, दोनों की ब्रेथ सेम होती है रेक्टेंगुलर के अंदर, ठीक है. तो आई कैन राइट 1 plus 1 that is 2l plus b plus b that means 2b. That means I can write perimeter for rectangle that is 2, मैं कॉमन निकाल लूंगा तो l plus b हो जाएगा. So if any time we want to find the perimeter for rectangle, so we will use this formula. क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b. इफ यू वांट टू फाइंड इट दिस वे, इट इज ऑल्सो आपकी मर्जी है, वो आपको इस फॉर्मूला से फाइंड करना है, देन इट्स योर चॉइस. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर क्वेश्चन 3. A tabletop measure 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the table? अब आपको पता है, as we know that table which is in your class, okay, वो table कैसा होता है? It is not square, it is rectangular table. Length of table is more compared to its breadth. Okay, so what is the length? Length is equal to 2 meter 25 centimeter and breadth is equal to 1 meter 50 centimeter. We have to find the perimeter. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे. So now this sum I will solve with this formula. Okay, my table is in rectangular form, so I will use this formula. So P is equal to 2l plus b. Clear students? So 2, what is L? My L is 2 meter 25 centimeter plus what is B? 1 meter and 50 centimeter. Clear students? So now we will add this. I am putting 2 as it is.
So how we will add 2 meter 25 centimeter plus 1 meter and 50 centimeter. So 5 plus 0 that means 5. 5 plus 2 that means 7 and 2 plus 1 that is 3. Here meter and here is centimeter. Okay student, so my answer is 3 meter and 75 centimeter. Clear? Now this is in meter and this is in centimeter. So I am making this total into centimeter. मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे करूंगा देखिए. I will add both of these. So it 3 meters 75 centimeter. It become 375 centimeter. ठीक है. 1 meter is equal to 100 centimeter होता है. उस हिसाब से इसको मैंने 375 centimeter कन्वर्ट कर दिया. Now multiplying 375 with 2. So 5 2s are 10. 1 carry. 2 7s are 14 plus 1 15. 1 carry. 3 2 is 6 plus 1 that is 7. So it is my answer is 750 सेंटीमीटर. मेरा आंसर ये मुझे मिला. तो मैंने दोनों रेक्टेंगुलर वाले सम सोल्व किए. एक मेथड अलग की, दूसरी मेथड अलग की. You can try both this method. Both the sums are different. Okay, this is question 2 and this is question 3. Now write this one so we can move forward. Now students, coming on to the question number 4 for the exercise number 10.1. What is question number 4? So what is the length of a wooden strip required to frame a photograph? They are asking to us if they want to frame a photograph, how much length of that would we need? Of a length of 32 centimeter and breadth of 21 centimeter. लेंथ हमको दी है यहाँ पे इन लोगों ने 32 सेंटीमीटर दी गई बस 32 सेंटीमीटर and breadth is equal to 21 centimeter. That means from this we can understand that the photograph आपने देखी होगी photograph घर पे you notice the photograph our board when we are hanging on a wall. तो आपने फोटोग्राफ देखी होगी रेक्टेंगुलर शेप में होती है. दोनों लेंथ उसकी ज्यादा होती है, दोनों की लेंथ सेम होती है और दोनों की ब्रेथ सेम होती है. ठीक है, फोटोग्राफ बनाना है तो रेक्टेंगुलर हुआ. सो सिमिलरली आई विल यूज द फॉर्मूला व्हिच आई टोल्ड यू दैट P is equal to 2 into L plus B. Now put the value length and breadth in this formula and you will get the answer of the perimeter, or you can say length of wood required for this photograph. Clear students? You will do it by yourself. I had explained you. अब इस फॉर्मूला में आंसर डाल दी वैल्यू डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Now coming on to the question 5. So what is question 5? So a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया है टोल्ड अस दैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक जमीन है रेक्टेंगुलर पीस के अंदर है, उसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 0.5 किलोमीटर. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रो ऑफ वायर. उसे फेंस कर दिया मींस उसे बांध दिया है, उसे मतलब एक बोलते हैं ना एक बाउंड्री बना देते हैं, वैसे बाउंड्री कर दी है पर 4 वायर से. रो 4 है मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के 4 लैंड है. ठीक है, ऐसे होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के. ये समझ लीजिए इट इज माई 0.7 किलोमीटर लेंथ एंड 0.5 किलोमीटर इट्स ब्रेथ. ये एक टुकड़ा नहीं है, इसने बोला 4 रो है मतलब 4 टुकड़े हमारे पास. सो 1 2 and 3 1 2 3 4. तो हमारे पास 4 टुकड़े हैं. तो अगर हम क्या करें, व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट 1. हम एक लैंड है ना उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, देन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई विथ 4, सो वी विल गेट द टोटल आंसर. सो व्हाट इज अवर ब्रेथ? सो P is equal to, first of all I will write the data given. L is equal to 0.7 kilometer, breadth is equal to 0.5 kilometer. Okay, so P is equal to 2 into length plus breadth. So now I will add this number. In place of length I will add 0.7 and in place of B I will add 0.5.
So 2 into 0.7 plus 0.5, that means 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here 2, here 1. So it become, my answer is 1.2. Okay students. Now taking this 1 on the left side, that means it is minus 10 raised to minus 1. That means multiply by 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Multiply by 10 raised to minus 1, that means 2.4. So my answer is 2.4. Clear students? ये मल्टीप्लाई तो करना आपको आता है ना. So 2 multiplied by 1.2, that means 2.4 kilometer. This answer is for one row. ये एक रो के लिए है. Now for 4 row of land, 4 रो के लैंड के लिए my answer will be 2.4 multiply by 4 होगा मेरा आंसर. ठीक है, हमें एक लैंड का मिल गया, उसकी पेरीमीटर कितना है 2.4. अब हमें बोला है 4 लैंड है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस आंसर विथ 4. सो 4 4s are 16 and 1 4s are 8 and 9. So my answer is 9.6 kilometer. Okay, now coming on to the, this is my total perimeter. यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, so write this from board so I can move forward. Now students, coming on to the question number 6. So what is question number 6? Read the question from the book. Till then I will write this question 6 on board. So have you read? So I will reading the question. So find the perimeter of each of the following shape. In this question number 6, they give us 3 questions with different shape, and we have to find the perimeter of that different shape. पहला क्वेश्चन ए है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के तीनों साइड दी है, उस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पेरीमीटर मीन्स addition of all the side of any figure, or you can say any diagram. So here the question A for question number 6 is triangle. So as you know, triangle have 3 sides, which I had already explained you in chapter number 4, basic geometrical idea. Okay students, so triangle have 3 sides, A, B and C, and they give us the 3, 4 and 5. They give the measurement of the side. Now we have to find the perimeter. So perimeter means AB plus BC plus CD, addition of all the side AB, BC and CD. I had add here. Now I will put their value. AB means 4, BC means 5 and CD means 3. They all are in centimeter. Okay students, now 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we get answer, that is perimeter of a triangle is 12 centimeter. Now coming on to the question number B. What is question number B here? So B is an equilateral triangle of side 9 centimeter. In equilateral triangle, all the side of a triangle will be same. Equilateral means equal. ठीक है, इक्विलेटर मतलब इक्वल होता है. तो इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर जितनी भी ट्राइंगल की साइड होती है, ट्राइंगल में साइड 3 होती है, तो तीनों का साइड का एक ही मेजरमेंट दिया है, वो है 9 सेंटीमीटर. सो दिस A, B and C all are 9 centimeter. So now we have to find the perimeter. So AB plus BC plus CD, adding all the side of a diagram, which is I had drawn here. So what is AB? That is 9. What is BC? That is also 9. What is CD? It is also 9. Now we will add this. So 9 plus 9, 18. 18 plus 9, that means 27. So my answer is 27 centimeter for the second question. Okay students, now coming on to the third question. What is third question? An isosceles triangle with equal side 8 centimeter each and third side is 6 centimeter. Now here they give us third triangle
that is isosceles triangle. That is C question. In isosceles triangle, the two side will be same and third side will be differ from another two side. दो साइड का मेजरमेंट सेम होगा और थर्ड साइड का मेजरमेंट सेम नहीं होगा, इसलिए इन लोगों दो ही वैल्यू दिए, that is 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो आपकी मर्जी से आप कोई भी दो साइड को आप 8 सेंटीमीटर ले सकते हो और एक साइड को आप 6 सेंटीमीटर ले सकते हो. तो आई हैड प्रिपेयर्ड ओवर हियर, मैंने यहाँ पे बना लिया है. नाउ आई हैव टू फाइंड द perimeter similarly which I had done in first two sums A and B. Similarly I will done here AB plus BC plus CD. That means summing of all the side of a triangle. So AB means 8 centimeter, BC means 6 centimeter and CD means 8 centimeter. So 8 plus 8, that means 16. 16 plus 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So my answer is 22 centimeter. Okay students, so I had solved the question number 6 for you, A, B and C. Now moving on to the question number 7. What is question number 7? Read in your book. Find the perimeter of a triangle with side measuring 10 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. In question number 7 which I had solved, it is similar to the number A. Question number 7 जो है ना वो क्वेश्चन 6 का A कैसा है उसकी हिस्सा ये है. इसके अंदर इन लोगों ने मेजरमेंट क्या लिया है, यहाँ पे 10 लिया है, यहाँ पे 14 लिया है, यहाँ पे 15 लिया है. उसका आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है. सो यू कैन डू इट वेरी इजीली बाय योर ओन. ओके, तो 7th one is in your homework. Okay students, now coming on to the 8th question, that is find the perimeter of a regular hexagon. Hexagon means there are 6 sides. Okay, जिस कोई भी फिगर की अगर 6 साइड होगी उसे हम बोलेंगे हेक्सागोन, with each side measuring 8 meter. So in hexagon there are 6 sides, which is the figure which is given in your. So I will write for you because there is no space right from board, so I can move forward. Now coming on to the question 6 for the exercise number 10.1, that is we have to prepare a hexagon and they give that hexagon have all equal side, that is 8 meter. hexagon की जितनी साइड है उन सबका मेजरमेंट क्या है, 8 मीटर. So first of all we will prepare the hexagon. So hexagon have 6 side. Okay students, hexagon have 6 side. This is called a hexagon. Okay, now this is my side A, B, C, D, E and this is my F. Okay, all have 8 meter, all are 8 meter. Now from this we have to find the perimeter. So as I already told you that perimeter means summation of all the side. So P is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. ठीक है, EF plus FA लिख दिया मैंने. Now all the sides are same, so I will write 8 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and this is 6. So I get my answer, that is 48 मीटर. ठीक है, मुझे मेरा आंसर क्या मिल गया, 48 मीटर मुझे मेरा आंसर मिल गया. समझ में आया सबको? You understand everybody? Now coming on to the question number 9. What is question number 9? Find the side of a square whose perimeter is 20 meter. So we know that perimeter we have to find and they give us side. Side is 20 meter. किसकी 20 मीटर दी है हमें? स्क्वायर की सब साइड. स्क्वायर में हर एक साइड 4 साइड होती है, स्क्वायर में सबकी सब साइड सेम होती है. तो स्क्वायर है ऑल द साइड आर सेम. तो 20 20 20 and 20, A B C and D. So we will find our perimeter, that is AB plus BC plus CD plus DA.
Okay, that is 20 plus 20 plus 20 plus 20. 1 2 3 4 4 2s are 8, that is 80 meter. So perimeter for this question number 9 is 80 meter. Okay student, no, over here they give us, we find the perimeter, हमें perimeter मिल सकता है, पर यहाँ पे perimeter हमें 20 दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है, हमें perimeter पहले से दे दिया है. Over here they give us perimeter directly. They give us that perimeter is equal to 6, कितना दे दिया हमें, 20 मीटर दे दिया है, ये पेरीमीटर हमें इसका दे दिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द साइड. इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी रीड करने में, ठीक है, हमें पेरीमीटर दे दिया है इस स्क्वायर का 20, टोटल पेरीमीटर हमें दे दिया, हमें साइड फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है. सो ऑल द साइड इन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर सेम, दैट इज इफ आई टेक दिस साइड इज A, this is also A, this is also, and this is also A. This perimeter is equal to AB plus BC plus CD plus DA. Okay students, so AB that is A, BC A, CD A plus DA is also A, and P is my 20. Okay, so 20 is equal to how many A I have, 1 2 3 4, so I will write directly 4A. Okay students, so my A is equal to 20 by 4. मेरा A क्या हो जाएगा, 20 by 4 हो जाएगा. ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इक्वल टू साइन के. सो 4 5 20, दैट मीन्स A is equal to 5 meter. Understand students? So each side of square is 5 meter. ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन भी राइट था. अगर मेरी साइड 20 मीटर होती तो मेरा पेरीमीटर 80 मीटर आएगा, पर क्वेश्चन रीड करना थोड़ी गलती होगी मेरी, उसके लिए बाद में पता चला कि नहीं, पेरीमीटर मेरा 20 मीटर इन लोगों ने दिया है, मुझे लेंथ फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस मच. Okay students, now coming on to the question number 10 for the exercise number 10.1, they ask a question that the perimeter of a rectangular pentagon is 100 centimeter. So this is called a pentagon. Pentagon means the pentagon have 5 sides, 1 2 3 4 and 5. Okay, they give us P is equal to 100 centimeter. Clear? And we have to find the each side of this pentagon. हमें ये सब की सब साइड फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि 5L is equal to P. कितनी लेंथ है टोटल, 1 2 3 4 and 5, so 5L is equal to P. ठीक है, P लिख दिया मैंने. Now P is equal to 100 and 5 as L as it is. Okay, now taking this 5 on the denominator, that means L is equal to 100 divided by 5, that means 5 2s are 10 and 0, that means L is equal to 20 centimeter. Okay students, so this is my question number 10. Now coming on to the question number 11. So in question number 11 they ask 3 questions to us. ओके, कौन से 3 क्वेश्चन पूछे. पहले तो उन लोगों ने हमें P इज इक्वल टू दे दिया, दैट मीन्स पेरीमीटर, which we had already solved this question in number 9 and number 10. Now we are solving in number 11. In 9 and 10 they give us perimeter directly. Similarly they give in question number 11 also P is equal to 30 centimeter directly. Now we have to find the question as per needed. Question A, what they ask us, लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्क्वायर. हमें लेंथ बनानी है स्क्वायर को बनाने के लिए, ठीक है. सो स्क्वायर हैव 4 साइड्स, स्क्वायर हैव 4 साइड. नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली दैट all the side of the square are same.
Yes or no? So I can tell that this is my L, L, L and L, and this is A, B, C and D, which I already explained you. Okay, square have all sides are same, so I can write directly similar to question number 10. How many L I have? 1, 2, 3, 4. 4L. So I will write 4L is equal to P. क्वेश्चन नंबर 10 की ऐसा करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 11 में first sum. So now in place of P I will write 30, 4L as it is. Now L is equal to 30 divided by 4 centimeter is your answer. Okay, this is your answer. 30 divided by 4 is per length of your square. If you want to divide, you can divide. If you don't want to divide and leave it as it is, it's depend upon you. Okay, now coming on B question. What is B question they ask to us? An equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें लेंथ क्या चाहिए? और ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो तीनों साइड के लिए हमें कितनी कितनी लेंथ की हमें स्ट्रिंग चाहिए. और दे गिव अस टोटल डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर. एंड दिस इज माय इक्विलेटरल ट्राइंगल A, B and C, and the side of AB is A, BCA and AC is A. So there are 3 sides similar to this. I will do like here 3A is equal to P. Okay students, now in place of P I will write 30 centimeter. So 3 will come down, so A is equal to 30 divided by 3, that means 3 tens are 30, so A is equal to 10 centimeter. मुझे 10 centimeter मिल गया. I had already explained you in previous question. What I had do here, I had add these 3 sides. I write 3A is equal to P because they give us P. Okay, and I had find all the side of the triangle. हमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या साइड चाहिए? 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर AB, 10 सेंटीमीटर BC and 10 सेंटीमीटर CA. So we will get the 30 centimeter triangle. Now coming on to the C question. A regular hexagon. As I already told you that hexagon have 6 sides. कितनी साइड होती है हेक्सागोन में? 6 साइड. तो सिमिलर टू द क्वेश्चन आई विल प्रिपेयर ए हेक्सागोन. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. A, B, C, D, E and this is F. And I will write the name of the side is X. This is my side X. So I have to find this X. So total side I have 6X is equal to P. मैं सबके वैसे ही किया, सब में सब कितनी साइड है उन सबको टोटल कर दिया, इक्वल टू P ले लिया. ठीक है. नाउ इन प्लेस ऑफ P I will write 30. So X is equal to 6 will be come down, that is 30 divided by 6, that means 6 5s are 30, that means my answer is 5 सेंटीमीटर. मेरा आंसर क्या मिलेगा? मुझे 5 सेंटीमीटर मुझे आंसर मिलेगा. तो सी क्वेश्चन में पता चल गया कि हेक्सागोन की हर एक साइड 5 सेंटीमीटर होगी तो मुझे 30 सेंटीमीटर का हेक्सागोन मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ here we had completed up to question number 11. The question number 12 is the two sides of triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is the third side? हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है. तो एक काम करते हैं, इसको सस्पेंस रखते हैं and we will come in the next video and we will solve this sum. Till then I will say stopping this video over here. Bye bye.